We welcome you all to Technovanza 2023 Guest Lecture Series. क्या इधर इधर क्या होस्ट कर रहा हूँ मैं भाई. इवेंट का नाम तुझे क्या करना है? Creators Conclave it is, bro. What is your event name? Okay, that's crazy now. Moving on, just okay, whatever. So, how was your day, guys? मेरा तो बड़ा अजीब जा रहा है. हेलो 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 भाई, मेरा तो बड़ा अजीब जा रहा है. मैं आज सुबह 2 घंटा ट्रैवल करके आया. वॉचमैन पूछता है आईडी कार्ड कहाँ है. मैं बोला भाई अब प्रॉब्लम है सर, आईडी कार्ड तो मैं भूल गया. तो बोला मैं कैसे मानूं कि तुम ये कॉलेज के हो. मैं बोला सर देखो, मैथ्स बड़ा सीधा है. मैं सुबह उठा 7 बजे, 2 घंटा ट्रैवल करने के लिए मैं किसी और कॉलेज में क्यों जाऊंगा. सेंस ही नहीं बन रहा. वो बंदा मानने भी तैयार नहीं है भाई. ऐसे कैसे लोग पाल रखे हैं, अपने समझ में नहीं आ रहा है मुझे यार. एनीवेज, ये सब बातें तो चलती रहेंगी. अभी ये सब बातें हो गई. अभी क्लास में बैठते होंगे तुम सब या सब बंक. अरे पब्लिक भाई, यहाँ उठने के बाद 4 बार सोचा जाता है. 76% अटेंडेंस है. एक लेक्चर नहीं गए तो कैलकुलेशन चलते दिमाग में 71-70% आ जाता है. फिर खैर इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, बीजेटीआई पुराना 100 साल. एक्स्ट्रा लेक्चर तो होने वाले हैं, इसका तो गारंटी है. तब उसमें कवर अप कर लेंगे. ये तो हम सोच के बैठे थे. उसमें जाते हैं कतई ना, खून में नहीं है इंजीनियरिंग वालों के. Anyways guys, hi and welcome to Technovanza's first ever Creators Conclave. Give a huge round of applause for yourself guys. अभी आप सबने इंस्टा का पोस्ट देखा था. हैशटैग नॉस्टैल्जिया भी आ चुका है. भाई सर एकदम फैन वाला फीलिंग आ रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा. हार्ट अटैक. स्कूल में जाने से पहले सुबह 6 बजे F.A.Q. स्कूल से आने के बाद मम्मी जब तक थप्पड़ नहीं लगाती थी उठने के लिए, कपड़े खोलने के लिए ना, हम तो टीवी में बस सामने बैठे रहते थे. वो एकदम हार्ट अटैक ग्लू की तरह, आधा ग्लू आधा पानी. So, I would like to welcome on stage Mr. Gaurav Juyal and Mr. Prateek Sethi. Give a huge round of applause, guys. Hi. How you doing, buddy? Good to see you. सर अभी भी नारी लेना से कांटेक्ट में हो आप. अभी थोड़ा दोस्ती यारी थोड़ी कम है. हाँ थोड़ा छूट गया उससे. नहीं यार, those were the days यार. गौरव सर NIT पास आउट है. NIT. Oh guys, my fault. NIT not NIT. माना इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लगा नहीं तुम्हारा नंबर, लेकिन सर NIT पास आउट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद. Gaurav sir himself has been actively working in the domain of teaching. He's a TEDx speaker, worked with many multinational companies such as Adobe, PayPal, etc. A founding faculty at Institute of Design in Jaipur. He has also mentored 15,000 students and over 9,000 teachers during COVID-19 outbreak. Bravo sir. Give a huge round of applause guys. Coming up, Prateek sir, आपका रील देखा था. क्रैश नहीं आ रहा है, दुख हुआ जिंदगी में से. टूट गया था दिल. क्या करें? उसको कार्टन में बंद कर रखा है. उसको कार्टन में बंद कर रखा है. Sorry. Crash. That iconic duo, sir. That's how it goes and it will go by the passage of time. Prateek sir is also the founder of creative director at Trip Creative Services, a multinational award-winning communication design house based out of Mumbai and Pune. An animator, producer, director, designer, and avid aerial cinematographer, ex-host of the hit kids science curiosity-based show F.A.Q. You want to say
student for VJTI. और ये मेरे सीनियर भी हैं NIT से. Yeah, we yeah, Very sir. yeah, both of us work from what do you where the what do you put it where, we're from the National Institute of Design Ahmedabad, right? Yeah, that's how things started. So let's begin with the first ever Creators Conclave of VJTI Technovanza's Creators Conclave. सर अब शो की शुरुआत भगवान के नाम से की जाती है. इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे. यहाँ होती चटपटी बातें है सर. तो एक इंसिडेंस हो जाए तो मजा आ जाएगा और क्या. चटपटी बातों का इंसिडेंट. हाँ. वो डिपेंड करता है आपकी चटपटी बातों का जॉनर क्या है, लेकिन मतलब वो भी शौक की बात है. नहीं मतलब बहुत चटपटी नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग हो सकती है. मैंने NIT की बिल्डिंग में ऐसा कंस्ट्रक्शन कराया ऐसा, ठीक है. माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द होल कैंपस वॉज अ 5 feet वॉल बिकॉज आई वॉज फ्लाइंग अ काइट उत्तरायण के दिन पे, और मैं पतंग उड़ाते उड़ाते 4th floor से नीचे आई फेल, ठीक है. सो ऑटोमेटिकली द वॉल वॉज नॉट हाई इनफ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम फॉलिंग, एंड देयरफोर उन्हें इंस्टेंटली ऐसा मेरा हाइट नाप के 5 फुट नहीं तो एग्जैक्टली वहीं पे उतना हाइट बढ़ा के, and I'm planning to put a placard there, maybe like a Jew wall. अफसर की बारी चटपटी बात. यार क्या NIT की बात कर रहे हैं? नहीं, कहीं की भी कर सकते हैं. कहीं भी सर. अच्छा, NIT की करते हैं. स्प्रे कैन्स नए मिले थे, राइट? Just figured out that okay, you get so many colors in spray cans. तो जोश में हॉस्टल में हर जगह स्प्रे कर दिया, डिजाइन्स बना दी, बाथरूम्स में भी डिजाइन्स बना दी, एंड देन वी गॉट थ्रोन आउट ऑफ द हॉस्टल. वो हेरिटेज बिल्डिंग है. सो हमें पता नहीं था कि भाई ये सब है, लाइक रूल है कहीं पे आप दीवार पे पेंट नहीं कर सकते. आई मीन यू लाइक इट्स अ क्रिएटिव इंस्टीट्यूट, करेंगे ना, बनता है. सो किया एंड देन बाहर भी फेंक दिया. that was a funny one. ठीक है सर, बातें तो अब चलती रहेंगी पूरा टाइम. इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपका डिजाइन कॉलेज था, मस्ती सब चल रहा है. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, प्रतीक सर. सो यू बीइंग एन डिजाइन स्लैश सिनेमा स्लैश एनिमेटर स्लैश पता नहीं कितने डिग्रीज पार किया आपने. तो सर, हाउ डू यू मैनेज टू डू ऑल दीज थिंग्स विद अ वेरी सॉलिड टीम? अकेले नहीं होता ये सब. दिस इज विद अ वेरी सॉलिड टीम. आई एम अ कम्युनिकेशन डिजाइनर, दैट्स व्हाट आई primarily do, and a creative director, right? I have interests in a lot of things. So if we're shooting a car, I said okay, चलो ड्रोन सीखना चाहिए. तो ड्रोन खरीद कर ले आए, ड्रोन चला लिया. फिर on the job only we realized that okay, these are things that I love doing. So then पूरे यूनिट को सिखा दिया कैसे ड्रोन चलाते हैं, right? So it's like you keep building on these things and you keep building your team's skill sets and assets as well. बन जाता है फिर यार, फिर मस्ती करते हैं, लाइक अगले फिर ऐसे ही फेदर्स बनते रहते हैं. फिर एंड द एंड यू हैव लाइक वन गुलदस्ता of feathers on your head. सर. Random. Sir, but isn't there any level of exhaustion which you get? Because sometimes it's like बस बहुत हो गया, एक ब्रेक चाहिए. उसके लिए तो छुट्टियों के लिए जाते हैं ना. So that's what holidays are for. Pretty much that's it, yeah. Like love what you do. I think if you love what you do, you don't actually end up working. You're just having fun. It's a good message for all of us right here. Sir, next question. Actually, this question is for both of you guys. So you guys completed your degree from NID Ahmedabad, which is a top-notch institute, obviously. But didn't you thought of going It's to? the best. It is. It's still the is. best. It is still. It's Yeah. the best. Just out there. Yo, we see. Sorry. Yeah, no, it's completely fine, sir. So didn't you thought of getting a job or building your own company, and you went to television instead? So when I was founding faculty, वो job था मेरे पास. See, the thing is, you guys still see us as what you saw us as on TV, right? But हमारा role बहुत सारा है beyond that. In fact, I'm currently pursuing, like you guys are pursuing some subject, I'm also pursuing something. So there is no difference between what you guys are doing and what I'm doing.
So I'm pursuing learning experience design because I enjoy knowledge sharing and students. So in तीनों का you can say where it converges, learning experiences. How can we create better experiences while you're learning something? It applies to corporates, it applies to schools and colleges everywhere, anywhere somebody wants to learn. So job बहुत नहीं है मेरे पास. In fact, when I realized कि see TV, it happened I guess to both of us, right? प्रोमोज में था मैं तो. अच्छा. मेरा तो काम ही था. मैं थोड़ा मेरा अच्छा आपका इनका अलग है. trajectory अलग है थोड़ा सा. मेरा तो just ऐसा उड़ती हुई खबर आई कि डिज्नी इज लुकिंग फॉर समवन, राइट? और ये कहीं पेपर में नहीं छपेगा, वरना ऐसे करोड़ों एप्लीकेशन आएंगे, वो कैसे, हाउ वुड दे गो थ्रू इट? सो इट ऑलवेज कम्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, सो इट रीच मी एंड आई जस्ट ट्राइड एंड इट हैपेंड. इट वाज नेवर प्लान्ड. In fact, I am pretty much always been introverted, so therefore being on camera was very deadly for me. It's not a comfortable zone. But try kiya. One thing I do is कि whenever something I have in my hand and when it's inevitable कि अब तो हाँ बोल दिया, then I'm like अब तो अच्छा करना पड़ेगा, अब तो इज्जत की बारी आ गई है, right? So just put your effort there. Don't think ये मेरा काम नहीं है, because ultimately आपका ही काम है, because आपके portfolio experiences, life experience में जाएगा, right? So Art Attack के बाद I realized कि media is great, but वो दिल से नहीं आता मेरा उसमें, right? So but I realized कि I love working with students and children. So I did a job as a class teacher. Art Attack के बाद I became a class teacher for grade 4 because I wanted to understand children better. Then I worked in a village school for a year because I thought कि education में ही होता, I need to understand 80% of Indian education, which is rural sector, right? Then I did a 1 year in establishing an institute of design. So there I was there. Right now I'm working with Byju's because again I need to update myself and add educational technology to my portfolio. Because I'm in education, so how can I leave out technology, right? Yeah, so it doesn't matter आपको पसंद क्या है, लेकिन अगर आप या तो अपने फ्यूचर को अगर आप अलग रखें अपने से, sometimes you have to do what is better for you as a professional. So once you realize that चाहिए मुझे, and then you do it. Right. So what about you? My journey was slightly different. I started off as being a promo producer, like 30 second के छोटे-छोटे television पे आते थे. So I started off at Hungama TV, and back then they just done the whole rebranding with the furry. Hungama TV में furry हुआ करती थी. So I was part of the team that worked with Tag to bring about the new packaging. It's called a channel packaging. So as a comms designer, right? तो वो मेरी trajectory always एक creative director की तरफ ही जा रही थी जिंदगी में. It's just that POGO happened because दोस्त जानते थे कि ये बंदा कुछ कुछ बनाता रहता है, कुछ कुछ बकवास करता रहता है ज़िंदगी में, तो चलो इसको भी ट्राई आउट के लिए बुला लेते हैं. And I was working with a production house at that time for another show. I was designing the packaging for that show, so वो चल रहा था. उन्होंने बोला तू ट्राई कर ले, and the bigwigs at POGO loved what this thing is, and they said okay चलो ले लो इसको. तो फिर उसके बाद decide किया कि okay, does it have to be just Prateek? Is it also Prateek plus one? Is there no Prateek? Is there a female host? Is there a co-host? Is it Crash? No Crash? What will Crash be? What is the entity that we want to build on? A lot of thought went behind it. फिर ये हुआ. Entrepreneurship is something that I've always had because again, like as a creative director, television is only that much that it can give, right? And our brain is so big, like we can do so many things. So फंडा ये था कि दुकान तो खड़ी करनी है खुद की, राइट? पर कब करनी है वो फिगर आउट करना था. तो एक्चुअली पोगो ने ही मुझे अपॉर्चुनिटी दी खुद की दुकान खड़ी करने के लिए बिकॉज वी वर डूइंग द इन शो ग्राफिक्स एंड इफ यू रिमेंबर शो में छोटे छोटे एनिमेशंस हुआ करते थे टू एक्सप्लेन दिस एंड ऑल दैट. सो a situation arose in which they didn't have the right vendor or the funding. So we literally set up trip at that time because we were like चलो हम इसमें हाथ डालते हैं. तो खुद का ही शो था तो कर सकता था ये सब मस्ती. So उस तरीके से फिर वो एक push भी मिल गया and then one thing led to the other and then we got like where we are right now, which is working with the best brands across the world. So yeah. So my question, sir, Crash जो थे बचपन में used to feel so realistic. तो वो जो डिजाइन था वो उनका जो आपके co-host थे आपके साथ Crash. So how did he manage? I mean I know it's not related but still because it was so realistic to be honest. So fun fact, and it's a fun side fact that I keep telling everybody. Have you guys seen Hero the show? Shakti Bhakti hai, right? Shakti Bhakti hai.
So Hangama, when that show had come as one of the syndication pieces, they had decided to redo the show का packaging. So आपने notice किया होगा पहले हीरो का एक तरह का costume था, फिर उसके बाद में सारा show का change हो गया costumes. तो उसके costumes का design भी मैंने किया है. So I had previous experience designing like Vilayat and like Ricky all of these costumes. So in terms of the nuances, right, of what a suit should be, because if you're putting any kind of machinery behind it, the kind of padding that you need to put, the kind of volumes you need to build, वो थोड़ा knowledge था पहले. तो hence when the robotics of it came in and when the suit aspect of it came in, the foaming, the feel, how it should work, it gelled in rather well because we knew that okay, crash का मकसद ये है कि हम बच्चों को दिखा सकें कि अगर कुछ बहुत like कुछ तोड़ना है या कुछ करना है, a human being shouldn't get hurt. It should be a crash test dummy. So it's always like crash, like it was a constant thing, right? So that was very programmed. It was very designed as an approach. बहुत अच्छा था सर वो डिजाइन. I swear to God. Team effort. Team effort. So next question, as you said you were an introvert. I don't think so. You were pretty well on show. नहीं तो अच्छा ambivert is the new word, right? Yeah. So उसमें क्या है कि when it comes to work or when it comes to especially students, मेरे पास कोई introversion नहीं है. But beyond this आप नहीं ढूंढ पाओगे मुझे, मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है? I will not be found anywhere. In fact, even after heart attack, I was like कोई नहीं पहचानना चाहिए मुझको, मुझे अपनी पानी पूरी शांति में खानी, मुझे अपने मोमो शांति में खाने ठेले पे खड़े होकर. So I used to still keep a beard sometimes. I don't, and I also have a very generic face and everything. तो कोई पहचानता नहीं, which I'm super happy about. So yeah, so है. नहीं sir, I don't agree with this. Yeah, even I don't agree. Yeah, I'm pretty sure, bro. You go into the airport and everybody is like, No, exactly. तब तक मैं निकल जाता हूँ. Sir, but for all the introverts out there or the ambiverts who are trying to get out of the zone, what would you suggest to them? So आपका ना एक zone होगा कि see the thing is कि मुझे लगता है purpose जो है ना वो बहुत powerful चीज़ होती है. अगर आपके पास purpose है और आपने realize कर लिया तब उसके लिए जीना पड़ता है अपने लिए. Do you understand? Because वो purpose follow करोगे तो आपको super satisfaction मिलेगा and then you are extremely happy. तो उस purpose के लिए then you have to not be extremely moody about yourself. Alright? So इसलिए purpose जो है, if I'm coming here, and also वो natural है थोड़ा सा. Like when I come and I talk, this is natural. Whereas otherwise, जैसे मैं NID में actually I stay on campus in NID, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे कुछ अगर चल रहा है performance, and I want to see the dance which is happening put up by students, मैं crowd देख के डर जाता हूँ, मैं वहीं से मुड़ जाता हूँ उल्टा, ठीक है? It happens very often. More often than I actually go and sit between people. So I avoid people as much as possible, especially unknown crowds. और वो natural है, मतलब वो बहुत difficult है. All the introverts understand कि कब जाना है कब नहीं. But at least काम के मामले में I don't let it interfere, because वहाँ पे I get a lot of satisfaction with what I do, just like Prateek and everyone, all the right. So we love what we do, and therefore sometimes you have to be like नहीं अब तो जाना पड़ेगा. Like we still have palpitations facing a crowd at times. टेड टॉक में तो बहुत टेंशन होता है रोज. वो एक्स जो है ना एंग्जाइटी का एक्स है उसमें, ठीक है? बहुत टेंशन वाला होता है बिकॉज एक तो उसका ऐसा हवा बना रखा है ना, बिकॉज ऑल द एक्चुअली हवा नहीं है, बिकॉज ऑल द पीपल हु रियली गिव अ मासिव टॉक उन्हें एक तो बेंचमार्क इतना हाई सेट कर रखा है, तो यू ऑलवेज फील दैट प्रेशर तो होता है उसमें. सो बट वो 2-4 मिनट में ब्रीदर लेके, सो द फर्स्ट लाइन इज द वर्स्ट व्हिच कम्स आउट बिकॉज यू आर स्टिल यू नो. Abhi recently I just gave it's sort of flex, but recently I just gave a TED talk at CRCE, right, which is the college in Bandra. And best था, मैंने एक मस्त ऐसा presentation तैयार किया था. Okay, like I was like as usual I'm a comms designer, so it has to be a very good presentation, right, visually exciting and animations and all of that thrown in. वो presentation चालू ही नहीं हुआ. So I'm like and then जब मैंने बटन दबाया तो रुर करके all the slides showed up like one after the other, right, करके so the presentations and I was like okay and now we will rewind. The first minute was just I know क्या है क्रैश हो गया आपका. हाँ. Sir, as you said, you lived on campus, right? So yeah, in this college, we have 50% of the public who is localite, and they for some reason
I don't know the reason. They just want to run away to their home. I don't have any goddamn reason to go home if I'm a localite. Yeah. यार माँ का खाना come on Exactly. माँ का खाना Yeah, but clearly. और इसका काउंटर नहीं है, इसका काउंटर नहीं है, लेकिन बट कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ Yeah, exactly. Sir, माँ के हाथ का जो खाना है वो तो we hostelites can actually feel about it. ये तो रोज का है इनके लिए. और किसी की भी माँ हो समटाइम्स, आई एम नॉट किडिंग। Yeah, मेरा exactly. ड्रीम था कॉलेज के बाद कि हर दिन एक मम्मी मिल जाए किसी की, वो मुझे खाना खिला दें। एंड आई एम सॉरी, मैं बॉम्बे में था तब आफ्टर कॉलेज, सो आई यूज्ड टू ड्रीम ऑफ दिस। तो फिर कॉलेज लेवल जैसे इवेंट्स तो चलते रहते होंगे, मस्ती मजाक, तो एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको actually brings you to nostalgic, what should I say, throwback. Is there any? आप सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ। नहीं पर कौन से स्टेज पे नॉस्टैल्जिया जा रहा है? At any stage. We will go with extreme. 3 साल की उम्र पे नहीं अभी रो जाएंगे वो, इतना नॉस्टैल्जिया। college. कॉलेज नॉस्टैल्जिया यार कुछ चालू कर। अच्छा, तो पहली बात तो ना, मेरा मेमोरी तो ऐसा फिश की तरह है, ठीक है। मुझे अपना लाइफ का 95% तो याद भी नहीं है, और ये मुझे बहुत खुश रखता है। वो लिमिटेशन भी है, डेफिनेटली अ बिग लिमिटेशन इन माय एजुकेशन परस्यूट, क्योंकि कितनी बुक पढ़ लूँ वो कभी मैं नॉलेज यूज ही नहीं कर सकता डायरेक्टली। आई कांट कोट अ बुक एंड आई कैन नॉट कोट डेटा एंड थ्रो इट एट यू, बट आई डू अंडरस्टैंड द कोर फंडामेंटल्स, आई कैन रियली क्लियर योर बेसिक्स इन लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। बट इसलिए थोड़ा नॉस्टैल्जिया की कमी है। कैसे होगा ये? But it has to be a funny story also. हाँ, That I guess. angle of humor has to be given. कम्युनिकेशन डिजाइन बना देते हैं एक स्टोरी। चलो मैं FAQ की कहानी सुनाता हूँ जो which I love saying every time is that when you're working with chemistry, right? How many of you guys here are chemistry fans? Any chemistry fans? Yay! Whoa. Chemistry fans! Woohoo! Right? Amazing. So Expected outcome. So when you're doing chem in a lab and you're working with sodium in a lab, right? It's a whole different ball game because reactions happen like that, right? Things move very fast in chemistry, usually in reactions. But when you're doing it on a shoot floor, you cannot control it. मतलब कहानी काफ़ी फनी वाली है कि हम सुबह आते थे कि लाइक अच्छा हम स्केड्यूल पे हैं, ये अब मैं आज ये 4-5 एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा एंड यूजुअली इट्स अ 4 कैमरा सेटअप, राइट। सो एक कैमरा जैसे मेरे खोपड़े पे है, एक कैमरा वाइड पे है, एक कैमरा मेरे हाथों पे है कुछ देखने के लिए, एक कैमरा क्रैश पे होता था, राइट। एंड दैट गाय यूज्ड टू रोव अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर द सेटअप इज। सो अब आपको डायरेक्टर साहब बोलेंगे कि लुक प्रतीक, दिस इज द एक्टिविटी, राइट, यू आर गोना बी डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट नाउ एंड नाउ जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन दिस मच स्पेस। तो मतलब मैं कुछ भी करके आऊँ, यहाँ पे मेरे को लैंड करना है, राइट। एंड इनवेरिएबली मी बीइंग मी, मैं एक तो वहाँ पे मार्क अपना मिस कर दिया, मैं आकर यहाँ पे करूँगा, राइट। सो एंड इट्स केमिस्ट्री, राइट। इफ इट्स फिजिक्स, इफ इट्स यू नो मैकेनिकल थिंग्स, इट्स इजियर बिकॉज यू कैन जस्ट गो लाइक यू नो तो मैंने शिफ्ट करके ऐसे ले आया। बट विद केमिस्ट्री रिएक्शन वहाँ पे हो गया यार। सो यू आर लाइक ला ला ला। And that used to happen so often that you're like, there's a reaction in place, and I'd always end up missing my mark because there are a lot of things happening, and I'd always be like a couple of inches off or a couple of feet off, and sometimes. And sodium was like my best friend because it would refuse to react. I don't know why. हम बाहर जब actual lab में काम कर रहे हैं, man, like it's like आज तो मतलब ये reaction होगा ही, like इतना set है। जैसे ही हम एक्चुअल शूट फ्लोर पे वो जो लैब की टेबल पे है, शूट लैब पे, टेक 42, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। और देखो ये रिएक्शन हो रहा है। ब्रो, लाइक आई एम डूइंग दिस 42 टाइम, हाथ दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, सब कुछ, लाइक थिंग जस्ट रिफ्यूज। फाइनली उसको टेबल पे रख दिया ऐसे, लाइक अपने बीकर एंड पेट्री डिश को वहां पे रख दिया कि भाई ये देख लो, जब हो जाएगा तो हो जाएगा। So things like that, you know, like shoot is always exciting and fun. You just work with it. अगर ब्रेकिंग बैड जल्दी आया था ना, आई एम श्योर पीछे आपके लैब में कुछ और चल रहा है, बैक एंड में मटेरियल मंगाया जा रहा है, अरे शोकले चाहिए, ये सब केमिकल लेके आ जाओ। एक टफ था। फिर आपको एक्सपीरियंस शूटिंग में तो काफ़ी बहुत कुछ होता है, बिकॉज पहली बार जब शूट करना शुरू किया, लाइक आई सेड, मैं थिएटर वाला भी नहीं हूँ ना परफॉर्मर हूँ। I dread those things.
कॉलेज में एक बार नहीं, स्कूल में एक बार आई वाज वन ऑफ द 100 किड्स इन द पाइट पाइपर स्टोरी। वो ने बीन बजा के जा रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं पीछे, सो आई वन ऑफ देम। उतना ही किया लाइफ में, उतना ही बस। सो कैमरा वाज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि ना इट्स द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, एक कोई भी कांच का एक पीस लो, ठीक है, जस्ट कैन यू फेस दैट बॉटल इन फ्रंट ऑफ देम, बॉटम टुवर्ड्स देम, बॉटम, हाँ वो सेंटर है ना, वैसा एक लेंस रहेगा कैमरे का, बस उसके सेंटर में, इधर उधर भी नहीं हो सकती आपकी आँख, उसके डेड सेंटर में आपको देख के बोलना है। 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटा मल्टीप्लाई बाय 3 महीना 4 महीना, बस उसके सेंटर में। इतना बोरिंग काम है ना ये, and you have to feel as if you're the most excited person in life, right? Right behind the camera also, there'll usually be one of your really close friends, like a director of photography, sitting with those headphones on and the mic, you know. Oh my god, oh my god. And Art Attack ना ब्यूनस आयर्स में शूट हुआ, which is in Argentina, okay? वो इंडिया में शूट ही नहीं हुआ। वो उसके बैक एंड डिज्नी के वो बिजनेस व्हाट यू कॉल स्ट्रैटेजी वाले डिसीजंस हैं। बट पॉइंट बीइंग, मेरे जो प्रॉम्प्टर होता है ना, प्रॉम्प्टर इज द गाय हु जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको प्ले करता है इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और तो आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, सेंटर में देखेंगे, लेकिन पेरिफेरल विजन से स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है आपको। यू कैन रीड अ स्क्रिप्ट, क्योंकि जैसे आपने ऐसा पढ़ा ना तो दिखती है, वो स्पेनिश बंदा है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी है इंग्लिश में जो हिंदी में है, ठीक है? तो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ के और मेरे साथ मैच कर रहा है मेरी हिंदी। ऑलराइट, सो दैट वाज समथिंग। वो करता था और क्या बोल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है वो प्रॉम्प्टर पीछे की तरफ। सो यार मैं मेरी मेमोरी भी नहीं है, मैं कहाँ से लाइनें याद करूँगा? किस्सा ही होती थी। They used to make me do it. बिकॉज द थिंग इज ना, एक तो स्पेशली आर्ट अटैक ना, बिकॉज पुराना शो है तो डिज्नी ना बहुत Format. भयंकर रिजिड है अबाउट, वो चेंज नहीं हुआ शो। इफ यू सी बैकग्राउंड इज वेरी सिमिलर। 84 में पहली बार वो शो शुरू हुआ था, नील बुकैनन ने रिलीज किया था, ही वाज अ प्रोड्यूसर एंड द हिट एंटरटेनमेंट का, द डिज्नी गॉट द राइट्स लेटर, बट वो शो बिल्कुल चेंज नहीं किया उन लोगों ने। तो शो का फॉर्मेट एवरीथिंग, और डिज्नी के तो और भी थोड़े से चोंचले हैं, ठीक है? डॉग को डॉग ही बोल सकते हो, डॉग बोल ही नहीं सकते। ऑलराइट, मेरे बाल निकाल दिए डूड हाथ से, Saying bro. अरे डिज्नी है वो, ठीक है? तो यार यहाँ पे वैक्सिंग, यहाँ वैक्सिंग सब कर खुरा के, मतलब इट्स पेनफुल, मतलब काफी सैक्रिफाइसेस करे मैंने लाइफ। You were a plucked chicken. I was plucked chicken, but now I understand the pain that people go through when they are doing waxing, you know. हाँ, तब मुझे पता है। So हाँ, तो behind the scene ना, it's not an easy task honestly, because you have to maintain your rhythm, you have to maintain your composure, you have to maintain everything, which most fields are, उसमें वो सब नहीं चाहिए आपको, इसमें चाहिए। So it's not an easy job definitely। और एक दो बार तो सेट में गिर भी गया था मैं। So मैं जा रहा हूँ कि अब ये करेंगे, और I step on my own foot and I try to lift this up, so दोनों ही पैर ऐसे ना लूनी ट्यून्स की तरह करते हुए। So it's but really fun, a lot of fun definitely। So, since we are on the topic of sets, any pranks that you have pulled off on set? यार ये फोरम पे नहीं बोलते ऐसे, like it's just It's not the right platform. for pranks. Please, just. No, I'm not gonna prank someone. हमारी तरफ प्रैंक तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। सेट पे तो ऐसा था कि सेट पे इट्स वेरी डेलिकेट मतलब यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। व्हेन यू आर नॉट शूटिंग, आपके जूते में जाएगा एक शू कवर, राइट? एंड एवरीवन ऑन द सेट इज वेयरिंग अ शू कवर, उसमें एक तिनका नहीं हो सकता पूरे सेट पे। सो तुम शूज भी साफ होके आएंगे, एंड देन यू रिमूव दैट कवर एंड देन एंटर द सेट। द मोमेंट दैट इज डन, यू वेयर इट अगेन एंड गो आउट। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। लाइक एक बार आ जाए ना यहाँ पे, रीशूट होगा, फिर आपका सिंकिंग होगा आपके बीच में, कैमरामैन के बीच में, एंड अगर माइक यहाँ पे लगाया और हल्का सा बम्प लग गया, फिर से रीशूट होगा। सो ये कोऑर्डिनेशन में ही कई बार 10 टेक जा रहे हैं, राइट? तो प्रैंक तो नहीं हो सकता वहाँ पे, सॉरी। So, लेकिन फिर at that time you guys were fresh out of college and so ऐसे लगता नहीं था कि टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं हम शो को, या you used to be like ठीक है चल रहा है बस? Could you repeat the question? नहीं, my question is simple.
So you were fresh from the college, right? जब नहीं थोड़ा time हाँ. के बाद अच्छा तो you know you were not with your family or friends, ठीक है? तो didn't you feel कि थोड़ा time देना चाहिए और ज़्यादा? Because as you said कि 10-10 12-12 takes होते थे बहुत बार and all that. और था क्या करने को लाइफ में? मतलब वो भी तो है। We were employees of Turner. I mean, I was an employee of Yeah. Turner. So Turner is the mothership that owns Cartoon Network, POGO, or all the other. It's a massive Yeah, network. yeah. So you're an employee. I have my job to do, and I'm doing my job. That's how it is. It's just that my contract was for a talent and a creative, person Yeah. who's joining the team. But काम तो करवाते थे यार अगर हम लोग पोगो के फॉर एग्जांपल आई वर्कड ऑन मैड आल्सो बिकॉज FAQ का जब हमारा शूट्स नहीं चल रहा था द टीम इज वर्किंग ऑन द साइंस ऑफ थिंग्स एंड वी आर बिल्डिंग द एक्सपेरिमेंट्स fun fact out of the I don't know like 200 odd experiments that made on air there were 2,400 experiments that did not make it on air, right? So there was a lot of research that went into it. There was a lot of testing that went into it. We had like labs set up with teams in which we were just constantly doing things like that. And उसमें से अगर फुर्सत मिलती थी, which was rare, तो हांगकांग से मैसेज आ रहा था कि अच्छा प्रतीक से कुछ और काम करवा लो, अच्छा वो एक और शो है उसकी पैकेजिंग करवा लेना, because वो तो anyways प्रोमो का है, he's a comms designer. तो बहती गंगा में काफी हाथ धोया गया है. So like वो हम स्कॉच ब्राइट का वो नहीं होता जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल से नीचे छोड़ते हैं ना. So वो भी चलता रहता था साइड में. So I think when you asked me earlier, like you're doing so many things, why don't you get like burnt out, or why aren't you in that space, or how do you make time? Because since the very beginning only, we've been thrown into like a pace which is like, bhai tu kar kaam, So that's the zone that I've always known. So. Sir, जैसा as I said, आप पब्लिक में जाते होंगे, ऐसे वो बंदा देखा है किधर, हाँ. So how does that feel? Being recognized by people. It's तू आंसर कर ले यार, ये मैं तो काफी सिंपल आंसर दूंगा इसमें. नहीं आप दे दो पहले फिर दे Doesn't affect anything purely because ठीक है कभी बार इंस्टाग्राम में बाद में पता चल जाता है किसी ने एयरपोर्ट में मुझे टैग कर दिया टाइप्स, राइट? Like so then you're like अच्छा साले. But yeah, because in my head I'm thinking like nobody knows me. I walk out of here right now, nobody knows me. I'm damn happy with that, right? Like we go into all these institutes and everything. It's all the fuss that is created around it. Like if I walk into a space, which is what in PR also we're taught, is that if I walk into a space with a lot of bhav, like with like 2 bodyguards and like other things, people suddenly will like, yaar isko to main janta hu, ye lo hai, but if you walk in aram se just being like a lukha that you are, right? Nobody cares. Everybody's like, yeah, this is another bloke, he looks like that guy. Yeah, like it's the full chalo, so doesn't affect that. आई थिंक थोड़ा हमारे जो एनआईटी की ट्रेनिंग है उसने थोड़ा सा हम्बलनेस मेंटेन कराई है मुझे लग रहा है. अगर हम शुरू से ही इफ वी वर ट्रेन्ड इन से मीडिया एंड एक्टिंग फ्रॉम स्टार्ट, तो जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होता है ना, ऑलवेज कीप योर फेम एंड वो बना के रखो, हमारा उल्टा था. हमारी ट्रेनिंग इज वेरी ग्राउंडेड इन दैट सेंस. तुम बाहर निकले तो वी आर ऑलवेज द सेम. हवा में तो आप लोगों ने चढ़ा है, सच्ची में हम तो I mean, I have no words to say, but sir, let's play a small game. The game's name is Two Truths, One Lie. व्हाट 2 truths, 1 lie. भाई कॉम्प्लेक्स हो गया तो. भाई मतलब क्या You will give 3 statements. ओटीपी मत मांगना भाई. No. You will be given 3 statements. You will give 3 statements, and the public will figure out which one is the lie out of those 3 statements. अच्छा स्टेटमेंट हमने ओके. हाँ. स्टार्ट विद हिम. अरे एग्जांपल दे देते दोस्त. Example. देखो उसको भी नहीं पता. नहीं ये तो दूंगा. My first statement is मैं आज सुबह ब्रश नहीं किया. Second. That's how this goes. अच्छा and to any random others also. Yeah. नहीं तो कर यार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसा डेटाबेस में से कुछ बना रहे हैं. थोड़ा ना प्रिपेयर करके थोड़ा सा पहले बता दिया करो ऑन द स्पॉट ऐसे. अब इतना बड़े होके एग्जाम देना पड़ेगा तो फिर क्या फायदा बताओ आफ्टर ऑल दीस इयर्स. इनफैक्ट इसका रिवर्स भी कर सकते हैं इज व्हाट आई एम थिंकिंग. If you want, you can try, sir. हम लोग वही सोच रहा हूँ कोई है यहाँ पे क्रिएटिव बंदा सभी जो हैं. जो स्टेटमेंट को रिवर्स इंजीनियर करके वहां से कुछ आए. Anyone who wants to perform, come on. मतलब गिव एन एग्जांपल. अच्छा बिकॉज़ अदरवाइज सोचो चाहे में चला जाएगा. ओके
Dean statement. I'm married. I'm a dancer, and तीसरा मैं सोच रहा हूँ यार. Anything, it can be any experience which you have gained in your college life, या कुछ भी जो है लगे. I'm married, I'm a dancer, I'm wearing white shoes. Okay. Third one is I'm wearing white shoes. I don't know. हाँ तो ठीक है. दो ट्रूथ इसमें एक लाई है. Guess कर. Is what the. ठीक है. मतलब उतना अमेजिंग नहीं था लेकिन स्टार्टर में ठीक है. ठीक है. प्रतीक से. What am I doing? Again. Same. दो सच एक झूठ. दो सच एक झूठ. Okay, दो सच एक झूठ. वो अब आ रहे हैं मुझे अच्छे वाले. भाई नहीं अभी आप करो. तुम्हारी गाड़ी चल चुकी है मेरी कॉल हो रही मैं पॉलिटिकल होने वाला था. Okay, two truths, one lie. Okay, I have worked with Ayuka, which is the inter-university astrophysics and astronomics in Pune people to build a satellite. I've built a satellite, and I have met the cast of Harry Potter. Ooh, tricky one. Come on. पहला वाला अयुका के साथ काम किया है, दूसरा सैटेलाइट का है, एंड तीसरा हैरी पॉटर के साथ. So I need a unanimous answer, guys. अच्छा. नंबर थर्ड वाला कौन बोल रहा है लाई है? एक है. हैंड्स अप. इज लाई. ओके. कौन बोल रहा है सेकंड वाला इज लाई? और कौन बोल रहा है फर्स्ट वाला इज लाई? तो सेकंड वाले को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा. ओके. क्या सेकंड वाला लाया है. लाया? राइट, सेकंड वाला लाया था. तो हो गया दोस्त. एक ही और मतलब कुछ कहीं और. मैं बोल रहा हूं वी कैन इवन गो टू ऑडियंस क्वेश्चंस. Yeah, let's do audience questions. Yeah, that Okay, yeah. Come on, audience. Yeah, this audience seems very responsive. Yeah. You know, come on, guys, ask us anything. Yeah. एक माइक पकड़ा दो. चल I'll do. How many of you are from this college? ओहो, प्राइवेट इवेंट कर रहे हो तुम लोग. हमारा मतलब ही नहीं है. My question is, you have hosted like F.A.Q, so a lot of science experiments. इसको उधर देखना पड़ा कौन सा नहीं, slide नहीं, है. started at F.A.Q, so I was like, This is what happens on camera. नहीं तो आपने बहुत सारे science experiments को बहुत fun करके you put it on screen. So when you were shooting for it, did you ever feel कि this should be taught like this in schools, like how it is taught in schools? Because we as kids will love to see all those science experiments in F.A.Q. But then, do you ever feel that this is how it needs to be taught in school? Like, how about inculcating this into our curriculum as well? See, two-folded answer. One, if it was inculcated into our curriculum, it would be difficult because there's certain nuances of having a very regimented approach to learning, which works in favor as well. But don't get me wrong. What should work is that learning should be fun, right? So I wouldn't say that you add these experiments into the curriculum, no. But what you are taught in the curriculum can be taught in a fun way, is what a better approach angle would be. Because what we were doing was a lot of it was also at the end of the day flashy, right? It was very flashy, like, oh, friction दिखाना है, दो गाड़ी को join कर दो, एक book डाल दो बीच में, right? खड़ा कर दिया उसको, अभी friction, वाह, like, 800 उड़ गई. Which in a school you're like, bro, what is this, like, मतलब what flex is this? You know, like, so hence, but if friction was taught in a fun way, and if the activities around it were fun, then yes, definitely agree with that. Yes, sir, sure. We have learned a lot of science experiments and those science concepts from your TV show. So, thank you so much for those fun experiments. Actually, हाँ, तो अगर आप साइंस ही पढ़ा रहे थे ना, आधे बच्चे इंजीनियरिंग नहीं कर रहे होते. साइंस से केवल वहीं से जगह है. एक सेकंड, don't blame me, okay? Do not blame me. Yeah. Just a second, Mike. Give the mic.
question for both of y'all is, like, 5 years down the lane, do you all look at exploring some other fields? If yes, what it could be, and if not, where do you all see yourself, like, doing something different than what y'all have been doing till now? अच्छा Like any pivot or something? अच्छा देखो अदर फील्ड में एक लिस्ट बताता हूँ आपको, ठीक है? पेडागोजी में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, करिकुलम डिजाइन, पेडागोजी which is not, it's something else. Wood carving I do, pottery I do a little bit, I do a lot, some bit of furniture making, I do a lot of repair work. उसके अलावा माउंटेनियरिंग एक अलग चीज़ है which I love. मेरा कोर्स भी आ रहा है एडवांस माउंटेनियरिंग अभी, बट मेरी both my wife and my mom, दो महत्वपूर्ण महिलाएं ने मना कर दिया मुझे. So I need to figure out. Last time we had some from in the same course, some trainees died because of avalanche and all. Yes, and I am. You did basic? Nice. It has a 2-year waiting period. Yeah. Where is this human being? वो पीछे वहाँ पे. स्टार्टअप अदिति. So yeah, so ऐसा हम लोग एक चीज में satisfy नहीं होते हैं. Yes, Aditi, you were saying something. Sorry. Yeah, so even I did basic mountain course last year only. I had to Nice. miss 1 month of my education here. So Worth it था ना? amazing, amazing. And I was like, my mom also did from there only. Oh, nice. So you know, when I returned from NIM first time, मुझे लगा बाकी दुनिया को देख लगा कितने mere mortals हैं सारे के सारे. Because hardcore है वो. मतलब वहाँ पे 50% is army people getting trained and 50% people civilians getting trained on the same thing. There is no difference. So आप साथ में ही ट्रेनिंग ले रहे हो तो it's like ruthless. तो after doing it मैंने कुछ ऐसा किया है जो कि मतलब बाकी दुनिया ये तो तुच्छ प्राणी ये सारे के सारे और इंसान नहीं देखा 28 दिन तक because we are in the mountains. So when we return वाले लोग लड़कियाँ so It was an amazing experience as well. Yeah. So when did you do the course? In which year? first year of my college you can say 2006, 5 or 6. Oh my God. Yeah, and अब वापस एडवांस आ रहा है. Do you see the amount of difference? So it's never too late. उस समय I was like what, maybe 19, 20.